SBA Publications. So student, now we learn multiplicative inverse of a fraction. तो fraction का multiplicative inverse क्या होता है? So we need to know multiplicative inverse to understand division of fraction. ठीक है? Two numbers are the multiplicative inverse of each other if their product is 1. तो हम दो numbers को multiplicative inverse कब कह सकते हैं? अगर उन दोनों को हम multiply करते हैं और उनका product 1 आता है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है. जैसे फॉर एग्जांपल 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4. Okay, so here we get 5 1 5, 5 1 5 and 4 1 4, 4 1 4. Here we have 1 as a product. So we can say that 5/4 is the multiplicative inverse of 4/5, and we can also say that 4/5 is the multiplicative inverse of 5/4. Means 4/5 का multiplicative inverse होगा 5/4 and 5/4 का multiplicative inverse होगा 4/5. And how do we find out the multiplicative inverse? तो जो न्यूमरेटर होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो उसका डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो दूसरे फ्रैक्शन में जाके मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे जाके उसका न्यूमरेटर बन जाता है. ओके, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. So here some questions are given, that is we have to find out multiplicative inverse of the given fraction. And we know that if we want to find out multiplicative inverse, so numerator will become denominator and denominator will become numerator. Means हम कह सकते हैं उसका उल्टा कर रहे हैं. जैसे अब लिखा है 2/5, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/2. ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 5/2. तो यहाँ बॉक्स में हमारा आ जाएगा आंसर 5/2. So here denominator will become numerator and numerator will become denominator. Okay. Next we have here 4/7. So इसका multiplicative inverse क्या हो जाएगा 7/4. 1/2 means 2/1. 6/7, 7/6. 3/5, 5/3. 8/9 का multiplicative inverse 9/8. And multiplicative inverse of 6/5 is 5/6. And here 1/3 का multiplicative inverse क्या हो जाएगा 3/1. So here we can observe that all the numerator will become denominator and the denominator will become numerator if we want to find out multiplicative inverse. Okay, now we will learn how to divide fractions. Okay, let us learn to divide fractions. So dividing a whole number by a fraction. अगर हमें whole number को एक fraction से divide करना है तो हम कैसे find out करेंगे? So example number 1 is here. Sujata has bought 4 kg of dry fruits. तो सुजाता ने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स खरीदे हैं कितने 4 kg. ओके, she wants to pack them in gift packs of 1/5 kg each. अभी वो क्या है, उसे क्या करना है, जो इसने 4 kg ड्राई फ्रूट खरीदे हैं उनको वो पैक करना चाहती है, मतलब गिफ्ट पैक्स बनाना चाहती है जिसमें उसने 1/5 kg को डाला है. ठीक है, सो हाउ मैनी गिफ्ट पैक्स विल शी एबल टू मेक. तो हमें बताना है कि अगर वो एक पैकेट में 1/5 kg ड्राई फ्रूट्स डालती है तो वो कितने पैकेट्स बना सकती है, कितने गिफ्ट पैक बना सकती है. सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मैनी 1/5 आर देयर इन 4. अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 4 किलोग्राम में 1/5 kg कितने हैं. एंड फॉर दिस we need to divide 4 by 1/5. And how do we divide? 4 divided by 1/5. Here 4 is dividend and
1/5 is our divisor. Okay, so for that, first we will write 4 as 4 by 1. Okay, and then we have divided by 1/5. Okay, now we will find the multiplicative inverse of second number. Means we can say that we have to find out multiplicative inverse of divisor. So how do we find? 4/1, and we already learned that multiplicative inverse of 1/5 is 5/1, because numerator will become denominator and denominator will become numerator. So here we get multiplicative inverse is 5/1, and हम उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है उसको डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वी कैन से दैट वी कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So here we get numerator to numerator, 4 5 is 20 and 1. We can write here 20. So we can say that Sujata can make 20 gift packs. Okay. Next, to divide a whole number by a fraction, we multiply the whole number by multiplicative inverse of the fraction. तो जब भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है होल नंबर को एक फ्रैक्शन से, तो हम क्या करते हैं, पहले जो फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे और उसको करने के बाद उसको डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे. So we can get our answer. Okay, now next is डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. अब क्या करें, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल 2, रीमा हैड 4 होल 2/5 मीटर लॉन्ग रिबन. शी कट्स इट इनटू 10 पीसेस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द रिबन. ठीक है, तो रीमा के पास क्या है, 4 होल 2/5 मीटर टोटल रिबन है. ठीक है, उसमें से उसने उसके 10 पीसेस कट करने हैं, तो उसने उसमें से 10 पीसेस कट कर लिए इक्वल. तो आपको बताना है कि हर एक जो पीस किया है 10 में से एक पीस जो है उसमें से उसकी लेंथ कितनी है. सो हाउ डू वी फाइंड इट, वी कैन राइट लेंथ ऑफ द रिबन इज 4 होल 2/5 एंड नंबर ऑफ पीसेस कट इक्वल्स टू 10. सो लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें एक पीस की लेंथ निकालनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसको टोटल पीसेस से डिवाइड कर देंगे. So it is here 4 whole 2/5 mixed fraction. So we convert into improper fraction. 4 5 is 20 and 2 22/5. Okay. So here we have 22/5. Then we have to divide it by 10. And we know that if we want to divide some number, so we have to find out their multiplicative inverse. सो 10 के नीचे 1 हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/10, और 1 जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सकते हैं तो डिविडेंड को मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर वी हैव 21 to the 22 and 5 10s are 50. So here 22/50 meter, or if we convert it into lowest term, so we have 2 1s are 2, 2 1s are 2, and 2 2s are 4, 2 5s are 10. So we have 11/25 meter of ribbon of each part. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं the length of each piece of ribbon is 11/25 meter. Okay, so student, here horse question is given. Let's solve it. So Rekha bought a cake for her daughters गंगा एंड यमुना. सो here रेखा ने क्या किया, एक केक खरीदा है. ठीक है, केक की शेप हो गई ये. फिर उसने क्या किया, she divided the cake equally between them. तो गंगा और यमुना के लिए उसने इक्वल पार्ट कर दिए उस केक के. ठीक है, यमुना said that the piece of cake was too big to eat. यमुना ने बोला कि ये जो 2 पीस हैं वो क्या है, बहुत बड़े हैं खाने के लिए. सो रेखा डिवाइडेड द पीस इनटू इक्वल हाफ. तो रेखा ने क्या किया, जो ये पीसेस किए थे इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया. ओके, जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ
What part of the cake was each piece? तो एक पीस का कितना पार्ट है वो टोटल केक का, तो कितना है 1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट अगर हम निकाले तो 1/4 हो जाएगा. नेक्स्ट, यमुना वांटेड स्टिल स्मॉलर पीसेस, लेकिन यमुना बोलती है कि मुझे इससे भी छोटे पार्ट चाहिए. सो शी डिवाइडेड हर शेयर इनटू इक्वल हाफ्स अगेन. तो उसने क्या किया, जो उसका शेयर था उसको इक्वल हाफ में और डिवाइड कर दिया. ठीक है, ऐसे इक्वल हाफ में हो गया. फिर व्हाट पार्ट ऑफ द केक वाज ईच ऑफ द पीसेस दैट यमुना गोट. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि यमुना को कितने पीसेस मिले, वो हमें बताना है. तो उसने क्या किया, जो उसका पार्ट था हाफ, पहले यमुना ने क्या किया था, उसको बोला कि ये बहुत बड़े हैं खाने के लिए, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया. उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ द केक वाज ईच पीस, इट इज 1/4. नाउ शी डिवाइडेड हर शेयर इनटू इक्वल हाफ्स अगेन. फिर इसको इक्वल हाफ्स में अगेन उसने क्या किया, डिवाइड कर लिया. सो व्हाट पार्ट ऑफ द केक वाज ईच ऑफ द पीसेस that Yamuna got. So here half piece and here half piece also. So here are 8 parts. ओके, हमें बताना है टोटल पार्ट्स के कितना पार्ट्स उसने खाया यमुना ने. तो 8 पार्ट्स टोटल हो गए, और उसमें से एक पार्ट्स अगर वो ले रही है, ईच पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शंस. ओके, सो लेट्स सी हियर. Dividing a fraction by fraction. Example number 3. A fast moving train 10/11 km 4 away from tunnel. If it covers 1/11 km in each second, how many seconds will it take to enter the tunnel? तो हमें बताना है, एक क्या है, ट्रेन है, वो बड़ी फास्ट मूव कर रही है और 10/11 किलोमीटर दूर है टनल से. टनल मतलब गुफा. ठीक है, अगर वो 1/11 किलोमीटर हर एक सेकंड में 1/11 किलोमीटर कवर कर रही है, तो हमें बताना उसे पूरा कवर करने में जो उसका डिस्टेंस है टनल से, तो वो कितनी देर में, वो कितने सेकंड्स में पूरा करेगी. सो हियर वी नीड टू डिवाइड 10/11 बाय 1/11. It is our total distance, and this one is covered in each second. So here 10/11 divided by 1/11. अब हमें पता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सेकेंड फ्रैक्शन होगा हमारा, मतलब डिवाइजर, उसका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और जो डिवीजन था उसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई. देन वी हैव हियर 11/1. So 11 से 11 कट गए, 11 was 11. We have only 10. It means 10 seconds. Okay. So the train will enter the tunnel in 10 seconds. So 10 seconds में वो 10/11 किलोमीटर कवर कर लेगी, जिससे क्या है, वो 10 seconds तक टनल तक पहुंच जाएगी. Okay. Now we solve the exercise. We have, let's do exercise. Multiply and write the answer in the lowest terms. So we know that 8 into multiply 1/5. So 8 ones are 8 and 5 ones are 5. So here we have 8 upon 5. And if we want to divide it, 6 divided by 5/6. Okay. So whole number, here is fraction. We find out the multiplicative inverse of 5/6. And what is the multiplicative inverse? First we write whole number, then multiply, and multiplicative inverse is 6 upon 5. Okay, so here we get 6 6 are 36 and 5 ones are 5. So our answer will be 36 upon 5. Just like that, you can practice of these questions. Now we will solve exercise 6.7 on the basis of our learning. Here we have, find the multiplicative inverse of each of the following. You know that
इफ वी वांट टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है. सो हियर 7 is given, that is whole number. We can write 1 in denominator. So what we get? Here we get multiplicative inverse of 7 by 1 is 1 will become numerator and 7 will become denominator. So we can write 1 by 7 is a multiplicative inverse of 7 by 1 or 7. Okay, just like that you can solve these questions by yourself. So here we have question number 2. Complete the following. First is dividing by 6 by 8 is the same as multiplying by. तो हम 6 by 8 का क्या लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल 8 by 6. ओके, सो इस तरीके से आपको बाकी के ऑप्शंस करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड एंड राइट द आंसर इन लोएस्ट टर्म्स. हमें पहले डिवाइड करना है और उसके बाद उसका आंसर लोएस्ट टर्म में लिखना है. सो हियर वी हैव 5/8 डिवाइडेड बाय 1/8. We know that it is divisor and this one is dividend. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड एज इट इज लिखेंगे 5/8 और जो डिवाइजर है उसका लेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, 8/1 एंड हियर वी मल्टीप्लाई. सो 8 से 8 गया, वी हैव 5 ओनली. और ये 5 जो है 5/1 भी लिख सकते हैं हम, 5 भी लिख सकते हैं, जो पहले से ही लोएस्ट टर्म है तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो आई हैव सोल्व वन फॉर यू एंड अदर पार्ट्स यू विल सोल्व बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिवाइड. हियर मिक्स फ्रैक्शन इज गिवन. 8 whole 2/10 divided by 2 whole 2/15. Okay, so you can see here mixed fraction is given. First we convert it to improper fraction. 8 10s are 80. 80 में 2 ऐड करेंगे, 82/10. and this one 2 5s are 30. 30 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 32/15. Okay, now हमें क्या करना है, डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, डिवाइजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15/32. ओके, सो वी कैन कट हियर 5 2s are 10 and 5 3s are 15. Here 2 1s are 2, 2 6 are 12, 16, and here 2 4s are 8, 2 1s are 2. And what will be the answer? Multiply numerator to numerator. 3 1s are 3, 3 4s are 12. And now 16 2s are 32. So here we have the answer 123/32. Okay. So rest of the parts you will solve by yourself. Now we have some word problems in question number 5. So here 1/6 meter thread is needed to make a garland. How many garland can Shreya make from 6 meter thread? तो एक garland बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है थ्रेड की कितनी, 1/6 मीटर की. तो हमसे पूछा है 6 मीटर थ्रेड से कितने garland बना सकते हैं. तो क्या करेंगे, 6 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 1/6 से. ओके, सो 6 डिवाइडेड बाय 1/6. 6 हमारा होल नंबर है जो एज इट इज लिखा जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो हमारा डिवाइजर है उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल करने के बाद हमें मिलेगा 6/1. सो 6 6 are 36/1. सो we also write it like 36. Okay, so now we can say 36 garlands can Shreya make from 6 meter thread. Okay, and the rest of the part of this question you will do by yourself. Okay, now here some HOTS question are given. Let's do. 15/25 is lowest term. हमें बताना है 15/25 की लोएस्ट टर्म क्या होगी. ठीक है, तो 15/25 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5.
तो अब हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. वी गेट 5 3 is 15, 5 5 is 25. We get 3/5. Where is C option is correct. So here we have the numerator is always dash the denominator in proper fraction. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का क्या रिलेशन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में? हमने पढ़ा था जब हम क्या करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉल होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो बिगर होगा. ठीक है, तो here some examples are given. The numerator is always less than. क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा होता है हमेशा न्यूमरेटर किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में. Which one of the following is smallest? तो सबसे छोटा कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे all the numerator are same means we can say these are the fraction those unlike fraction with same numerator. और सेम न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबको सबसे छोटा नंबर दिखा रहा होगा. तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 18. It is showing smallest number, so it is our right answer. Here we have to multiply 8 by 7 by 2 by 8. So 8 से 8 कट हो गया, हमारे पास आ गया 2 1 2, 7 1 7. First option is correct. So here fun activity is given. The reciprocal of a mixed fraction is always a dash fraction. हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं वो बनाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बना देगा हमें proper fraction. So we get proper fraction here. Now second one is when 1 is divided by fraction then the quotient is कि 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं उसके किसी फ्रैक्शन से just like 2 by 3. So what we will get? 1 into 3 by 2. So we have 3 by 2. It means we get reciprocal of the fraction. So here we can write reciprocal of fraction. Okay. Now next one, the reciprocal of 1 whole 5 by 7 is 5 by 7 is 1 7 is 7, 7 or 5 12. Here 12 by 7 and the reciprocal of this 7 by 12. So here we get 7 by 12. Next, in a class of 45 children, 4 by 9 were boys. The number of girls will be. So total children are 45 and boys are 4 by 9. So 4 by 9 of 45. 9 5 is 45. Here are 20 boys and we have to find out number of girls. So number of girls को कैसे find out करेंगे? 45 minus number of boys. So we have here 25. So we can write the number of girls are 25. Which is greater 2 by 3 or 3 by 4? We already learned that how we compare the fractions. So here 2 by 3 or 3 by 4. We can cross multiply them. 3 3 is a 9 and 2 4 is a 8. It means 2 by 3 से बड़ा है 3 by 4. So here we can write 3 by 4. Next, dash is the only number which is its reciprocal. एक ऐसा नंबर जो उसी का रेसिप्रोकल भी होता है वो है 1. 1/1 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1. देयर 1/3 ऑफ किसी का 1/3 है, ठीक है, वो कितना है 9 है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 जाके मल्टीप्लाई, 9 3 से 27. सो हियर वी हैव 27. तो 27 का अगर हम 1/3 निकालते हैं तो वो इक्वल होगा 9 के. देन वी हैव टू राइट रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 9. वी नो दैट 9 by 7. Then we have 5 by 9 of 63 plus second multiple of 6. ठीक है, तो 5 by 9 of means multiply 63 plus second multiple क्या होगा 6 का? 6 2 जा 12. So here we have 9 7 is 63. So 5 7 is 35 plus 12. So
we get here 47. So our answer will be 47 here. Okay. So here we have question number 10. Take the correct option. A option is 0 divided by 6 is equal to. अगर हम 0 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा 0 ही आएगा. 7 by 7 has value. We know that if numerator and denominator has the same value, so it is equals to 1. Okay. So this is all about your chapter, that is fractions. Okay. So students, here we have math lab activity. So student, this is all about our chapter, and here an activity is given, your math lab activity. You will do it with your teacher in your class. I hope all the concept of this chapter has been clear to you all. Keep doing practice, it will make you perfect. I will meet you in the next class. Meanwhile, take care. Bye bye.